Hello students. Now continuation with the first part of the chapter, that is flower. We'll now study what is a bract. Just a preview of whatever we studied about the different parts of the flower. It's just now in front of you. The pedicel, the receptacle, the sepal, petal, stamen, and pistil over here. Now if when we talk about a bract, ये देखो ये जो पेडिसल वाला पार्ट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, when we talk about this we say that whenever a flower arises in the axil of a leaf like structure, axil of a, इस तरह से अगर leaf like structure है तो whenever we say, whenever the flower axil, axil means axillary part से, इस तरह से अगर फ्लावर, इसको कलरफुल कर लेते हैं हम थोड़ा सा, arises from the axil of the leaf part, इस तरह से अगर ये flower है, it arises from the axil of the leaf like structure. This structure is exactly known as the bract. Very much clear from, I have just given you the picture of a bougainvillea over here. Just see that here, I think so the flower is clear over here. Axil, it means that whenever it is, when the flower is growing from the stick itself, when we say see this, when the flower arises from the flower, when arises from the axil. Now what happens over here, the first thing we have studied before, that it will be the sepal which will grow, but here what happens, the bracts may be green or like a ordinary leaves, or at times they may be colored as in the case of the bougainvillea. It is very much clear, I think so. So we can say that here with a different color I'm using it out, if you are not able to visible over here, this is a bract over here. ना एग्जैक्टली बोगनवेलिया का फ्लावर आप बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर होते हैं, लाइक पेपर फ्लावर्स दिखते हैं. बट नाउ व्हाट हैपेंस हियर, द लार्ज एंड द कलरफुल ब्रैक्ट, एग्जैक्टली व्हाट क्या है, बेगन फ्लावर इज दिस पोर्शन, ये जो स्मॉल व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर है, दैट इज एग्जैक्टली द फ्लावर ओवर हियर. सो ब्रैक्ट क्या है, ये दिस पार्ट ब्रैक्ट, विच एक्चुअली लिख, देखो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में वेरिएशन भी दिख रहा है, तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, this is actually the bract which may be green or times it is the colored. A very good example, and this question comes here, that what is a bract over here. So we can say when the flower arises in the axil of a leaf like structure, this structure is known as a bract. Now when we, the actual flower in this case is actually somewhat cylindrical and attached on the inner side of the bract, inner side of the bract. देखिए आप आपके हेजेस में या बाउंड्रीज में बहुत लगे होते हैं, आपने खुद देखना है, जब तक आप खुद नहीं देखेंगे तब तक आपको उसमें कोई आइडिया नहीं मिलेगा. सो दिस इज द bract portion. Now I'll give you the this definition of this particular. Then we, when we talk about the nectaries, what is the nectaries over here, when we talk about the nectaries, next topic इसमें है nectaries. Nectaries, now what is the nectary over here, we can usually see that flowers consist of the sweet fragrant, है, बहुत sweet सा fragrant होता है flowers, जो attract करता है liquid like structure, the sweet fragrant liquid which is called as the nectar. Now this is the liquid thing over here, nectar. Now what is it, the group of these nectar secreting cells, the one, the group of, the group of nectar secreting cells is called
nectaries. So, and what is the position of this? Present at the base of the pistil. Pistil we all know. अभी हमने पिस्टल का स्ट्रक्चर देखा था. इस तरह से फ्लावर का देखो, ये फ्लावर मैंने आपके लिए सामने क्लियर रखा है. द फ्लावर ओवर हियर वेरी मच क्लियर. देखो कितना अच्छे से नेचर हैज गिवन सच अ ब्यूटीफुल थिंग टू इट. सी, हमें लगता है कि अंदर से कुछ शेडिंग पार्ट है ना, ये रेड सा जो डिनोट मैं करती हूँ, देखो ये ऐसा लगता है कि कुछ नेचर ने बहुत अच्छे से कलर किया दिस. बट एग्जैक्टली ये क्या है, ये पता क्या है? दीज आर द पाथवे फॉर द इंसेक्ट टू मूव इनसाइड एंड द नेक्ट्रीज आर हियर, द सेंटर द स्टिग्मा पोर्शन, इस तरह से डाउनवर्ड्स में द नेक्ट्रीज आर प्रेजेंट है. और ये फ्लावर हमने जनरली हमारे विसिनिटी में हमने बहुत अच्छे से देखा है. मैं आपको दिखाती हूँ ये फ्लावर, बहुत अच्छे से आप इसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे. सी दिस फ्लावर्स, इस तरह से फ्लावर्स है, इस तरह से इसके लीव्स होते हैं, स्ट्रक्चर राउंड से कुछ एग्जैक्टली. सो दिस इज अ, देखो बहुत अच्छे से देखना, पहचान लो, आपको जब भी मिलेगा दैट एग्जैक्टली इज व्हाट इज द नास्टर्शियम. द फ्लावर दैट नेम इज nasturtium. Example they have taken. So the nectar attracts the insects like honeybees. Now what is the function of the nectar? Function पूछा जाता है कि what is the function of the nectar. So function क्या हुआ? It will attract by the its sweet fragrant, it will attract the insects and which will help in the cross pollination. बच्चे अब क्लास 9th में हो गए तो will not just write that it will help in the cross pollination, but we can add on with the lines that this will attract the insects like honeybees and which will further help in the cross pollination. And the prominent example of it is nasturtium or nasturtium. This is the flower of nasturtium only, which I have shown you over here on the screen. You can see over here. So I think so very much clear. इस तरह से अगर हम इसका साइडवेज में स्ट्रक्चर देखते हैं फ्लावर का, तो अगर पिस्टल पोर्शन इस तरह से हमें दिख रहा है तो इट विल बी प्रेजेंट एट द बेस. इट विल बी प्रेजेंट एट द बेस, इस तरह से यहाँ पे बेस से जहाँ से स्टेमन्स निकले होते हैं, it will be present at the base. Now the next topic in the same is continuation of it regarding the sexuality of the flowers or sexuality in flowers. If you will go with this topic and you will just can comment me, I can add on with the quiz or the few questions over here. ये उस पर डिपेंड होगा बेटा, अगर you are interested to see my videos over here. So it is regarding the sexuality in flowers. When we talk about, अगर हमने पहले देखो, पहले हमने बात की थी about the structure of the flower, हमने उसमें male and female part की बात की. This is the stamen and this is the pistil, the female part. अब यहाँ पे बोला गया है whatever the male and the female part, if they are enclosed in a particular flower, in a single flower, that condition will be called as, I'll just write it over here, sexuality when male part, we know what is the male part of the flower. अपने आप से बोल बोल के recognize करेंगे, you will be able to get it down that it is the anther. Yes, the stamen, anther and filament will form the stamen. I just change the color of it. So stamen is that particular, and in other way the ovary, the female part, what will be the female part? The female part is the pistil. What do the pistil consist of? The pistil consists of the style, stigma, and the main part, that is the ovary, and inside ovary is the ovule, which consists of the seed. Okay, now when we say that it encloses this ovule
which encloses the egg cell or the female gamete, egg cell. Now question here arises, अगर आप इस वक्त में भी आप नोट डाउन कर लेते हो, these are some of the MCQs. The ovule exactly encloses the egg cell, which is the female gamete. Okay, so same over here, the male gamete, that is stamens. Stamens produces what? The stamen produces pollens, which actually consist of the male gametes. Clear beta? The male part and the female part of the flower. Stamen produces pollen, which is actually the male gamete. Pistil consists of the style, stigma, ovary, this part which is centrally located in the flower. इस तरह से. Okay, this is the style, this is the stigma, ovary, and inside is the locule, which consists of the seed, that is called as the ovule. Now this here consists of the egg cell, that is the female gamete. Now other thing over here, what is there, that if a flower, just change the color of it, if the flower has both male and female part, male and female part, or we can say what, consisting of both stamens or in fact and carpel, yes, it is called as bisexual flower. Bi means two, means both the parts are present. Bisexual flower, और बहुत अच्छे से वर्ड यूज होता है एक hermaphrodite. hermaphrodite, इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है hermaphrodite. It means that they consist of both the male and the female part. Example of it is the hibiscus, जो चाइना रोज हमने आसपास हमारे देखा है. एग्जाम्पल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज बहुत कॉमन, लिली एंड टोमेटो. हिबिस्कस जनरली दिखता है, रोज दिखता है, तो जो बाइसेक्सुअल है इसको ऐसे याद रखिए कि जो जनरल कॉमन बोल सकते हैं कि जो फ्लावर्स है विच आर अराउंड अस, दैट आर इज द bisexual. Now here in comparison to this one, if we talk about that, what are unisexual? Now अगर हमने bisexual की बात कर ली, तो what are the unisexuals? So when we talk about the unisexuals, हमने एक पहले एक टॉपिक आया था हमारे पास में, that is the flower which are incomplete, the flower which are incomplete. So when we talk about when the flowers are incomplete, that can also be called as imperfect. Now this incomplete or imperfect, it means that a flower has only one part or one of these essential parts. Essential कौन से हुए, male और female part in a flower. Yes, this will be called, it means it will having only stamens or the
carpels. So when we say that this consists of this, these will be called as the unisexual flowers. This will be called as the unisexual flowers. The example of this is, it is the papaya and palm. PP, बहुत अच्छे से याद रखना. PP, papaya and the palm. In other way the same, incomplete में इसको और unisexual flower which consist of, इसको दो parts में हम divide कर लेते हैं, which consist of, if they consist of only the stamens, only stamens, it will be called as staminate flower. Okay, and if they consist of, उसके opposite में only carpels, what will be a, it will be called as pistillate flower. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये ध्यान रखिएगा. द इनकम्प्लीट और द इम्परफेक्ट फ्लावर मीन्स कोई भी एक पोर्शन प्रेजेंट होगा या एक पार्ट जो एंड्रोशियम है और दी पिस्टल पार्ट प्रेजेंट होगा. तो अगर वो बोल रहा है कि इफ, अगर उसमें सिर्फ स्टेमन्स प्रेजेंट है, इट विल बी कॉल्ड एज द स्टेमिनेट फ्लावर. And if it is present only the carpel is present, it is called as the pistillate flower or the male flower. So, and where if we say about that, some of them are neuter flowers also. देखो नेचर में इतना कुछ है और हमें पता ही नहीं है इस बारे में. न्यूट्रल फ्लावर, so what are these? They consist, or they, sorry, they lack both male and female part or the organs. And example of it are usually the ray florets of sunflower. पिस्टलेट्स हैं ये सब. इट मीन्स दैट उसमें कार्पल प्रेजेंट होते हैं बट दे आर स्टेराइल. सो इसका एग्जांपल जरूर पूछा जाता है कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इट. इट इज द रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर. स्टेमिनेट फ्लावर का मैं आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल बताती हूँ. यूजुअली पूछा जाता है एग प्लांट. एग प्लांट पता है ना क्या होता है? ब्रिंजल. ओके, एज वेल एज कुकुम्बर. दो एग्जांपल याद रख लीजिए. The staminate ones are the ones which produce or which contains only the stamens and produces the pollen but no female part. So often they are found monoecious or dioecious, means one part if it present here. So we say that usually उसके examples हमें याद कर ले तो हम cucumber and the, what we say, the cucumber and the egg plant. Same as if we talk about the pistillate flowers. Pistillates flowers किस तरह के या किस में प्रेजेंट होंगे. सो वी से दैट द वन हु आर हैविंग द ओनली द कार्पल्स. एग्जाम्पल इसके कौन कौन से होंगे? तो कॉमन एग्जाम्पल जो उसके होते हैं वो इसी में आते हैं. उसमें से आप ऐसे ही याद रख लीजिए. अगर इसमें याद, पंपकिन हो गया इसमें, ठीक है, पंपकिन का हो गया, स्क्वाश हो गया, है वो सेम ही पार्ट है बट हम उसको इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं. सो ये ऐसी चीजें हैं जो याद रहे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए. एग्जाम्पल्स आर यूजुअली आस्क्ड ओवर हियर. सो एग्जाम्पल ऑफ द पिस्टल फ्लावर्स, इसमें भी आप, कुकुम्बर इज अ कॉमन हियर. वी कैन वेरी मच ऐड ओवर हियर कॉर्न, मेज. जैसे जो मेज को कैसे आप करोगे? कौन कौन सा होगा? जो सिल्क वाला पोर्शन होता है ना, एक्सटेंडेड फ्रॉम द ईयर,
जो भुट्टा होता है उसके में से देखना, ईयर ऑफ द कॉर्न इज क्लस्टर ऑफ द पिस्टिलेट फ्लावर्स, वही है। ओके, सो कीवी जो है, kiwi is also an example of this, because they usually bears the pistillate flowers and lack the pollen producing। ठीक है, तो बहुत अच्छे से एग्जाम्पल हो गया। कॉर्न में आप लिख लीजिएगा द सिल्क वोवन और द सिल्क लाइक एक्सटेंडेड फ्रॉम द ईयर, extending from the ear। ओके, सो एग्जाम्पल हमेशा याद रखिए, एग्जाम्पल्स आर यूजुअली asked over here। सेम अगर एग्जाम्पल, वैसे इसका तो न्यूट्रल फ्लावर्स का इट इज क्लियर ओवर हियर दैट व्हाट आर न्यूट्रल फ्लावर एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द न्यूट्रल फ्लावर। सो वेरी मच क्लियर। किसी में भी प्रेजेंट हो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, इनकम्प्लीट या इम्परफेक्ट फ्लावर कौन से जिसमें से वन पार्ट प्रेजेंट है। इफ they have only the stamens, that are called as staminate flowers, example is eggplant and cucumber। Same if they have only the carpel present, that is the pistillate flower, so that is the corn or the kiwi। Okay, and when they lack both the male and the female plant, that means that they don't have any of the reproductive organs, so they are the ones। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, जो सेंट्रल वाला पोर्शन देखना कभी भी, इट इज सेड द रे फ्लोरेट्स डिस्क फ्लोरेट्स होता है, जो सेंटर आर फर्टाइल और उसके जो साइड में होते हैं दे आर द स्टेराइल। वाइबरनम होता है, हाइड्रांजियाज होते हैं। बट चलो, जो आपको पता चल रहा है इस फ्लावर का, सनफ्लावर के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता रहेगा। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट दी, थोड़ा सा वापस कर लेते हैं। वी टॉक्ड अबाउट दी ब्रैक्ट्स। व्हाट आर ब्रैक्ट्स? बोगनवेलिया बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, उसमें एक्सिल से ग्रो करते हैं, डिफरेंशिएटेड इस तरह से डिफरेंशिएटेड होता है कि ऑर्डिनरी में ग्रीन भी हो सकता है, माइट बी कलरफुल, और एक कलरफुल ब्रैक्ट हमने किसमें, बोगनवेलिया में देखते हैं, बट यूजुअली हम इसको पेटल समझते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की नास्टर्शियम प्लांट की, वेयर नेक्टरीज आर प्रोड्यूस। नाउ व्हाट आर द नेक्टरीज? दे आर द स्वीट फ्रेगनेंट present which secretes the nectar or the group of cells present at the base of the pistil। what is the function of it? They help in the attraction of the insects, which help in the cross pollination। then the sexuality in flowers की बात की हमने, मेल पार्ट कौन कौन सा है, फीमेल पार्ट पिस्टल पार्ट है। if the flower has both the parts, it is called as hermaphrodite। the term is used as the hermaphrodite। hibiscus rose बहुत अच्छे से याद हो जाएगा हमें। and when they are incomplete means दोनों में से one of the part is present, they can be divided on the basis of it। if only the stamens are present, staminate flower; only the carpel is present, pistillate flower; neutral flower where both are absent, they are just for the attraction, that is the ray florets। जो center वाला portion होता है, that is the fertile in case of sunflower। okay, it's a eggplant, cucumber, and same here corn and kiwi। so I think so you like this video, and please like and subscribe and wait for the next. Any questions you can just comment over here, so that I can add few of the questions also if you need an exercise for it। so thank you, have a nice day।